कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप सी एंड डी में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया था, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुका। सो आई डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड साउंड। देखिए जो इन्फॉर्मेशन हम दिया ध्यान से देख लीजिए एंड पॉज करके नोट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट देखिए, गेन और लूज of time of a pendulum due to change place. Okay, a pendulum losses when take upward from the earth surface g diminished and thus t greater than t dash greater than t. Okay, so t is equal to 2 pi रूट अंडर एल वाई जी। ओके, देखिए टी डैश ग्रेटर देन टी है। ए पेंडुलम रन्स फास्टर एज इट इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एज जी इंक्रीजेस विथ लैटिट्यूड। देखिए इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देखिए ध्यान से। जो इक्वेशन है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये एल है, लेंथ है पेंडुलम का, जो लेंथ है उसी का, और टी है टाइम पीरियड। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका वैल्यू, जो इक्वेशन है इसका कांस्टेंट वैल्यू याद कीजिएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू है 3.14, जी 9.8 या approx 10. Okay, next, velocity of wave equal to frequency x wavelength. Wavelength equal to velocity of wave x period. Supersonic velocity क्या है देखिए, supersonic velocity, if the velocity of a body be greater than the velocity of sound, then that velocity is called supersonic velocity. Okay, Mach number या Mach number देखिए, the ratio of the velocity of the body to the velocity of the sound is called Mach number of that body. Thus, if the Mach number of a body be greater than 1, then the velocity is supersonic. Okay, change of velocity of sound। देखिए जो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। Within rise in temperature, the velocity of sound in a gas increase, thus velocity during day is always greater than the velocity during night. Due to same reason, velocity of sound in air during summer is greater than that during winter. Next, everybody like and share जरूर कीजिएगा and सब्सक्राइब कीजिए। Next, with rise in humidity, the density of air decreases। देखिए जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमिडिटी राइजेस, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी डिक्रीज, इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है। डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज, सेम एज नन ऑफ दैट। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज। फॉर दिस रीजन वेलोसिटी ऑफ साउंड in air is greater in rainy season compared to that in winter. Velocity of sound in air increases during a shower. At high altitude, velocity of sound
becomes smaller. Okay. Velocity of sound in iron is about 15 times that in air. Velocity of sound in iron, आयरन का बीच में जो वेलोसिटी है साउंड का वो 15 गुना बढ़ चुका है एयर से. ओके. इन ऑर्डर दैट एन नेक्स्ट in order that an echo may occur, the reflection surface must be at least 17 meter away from the observer. All harmonics are over notes, but all over notes are not harmonics. A musical sound generally consists of number of components having different frequencies. Such a sound is called a tone. In a tone, the tone having the minimum frequency is called prime tone. ओके. एवरीबॉडी देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आई डिस्कस. उसके बाद देखिए, इन ए टोन those tone having frequency higher than the fundamental are called the overtones. Tones, overtone, prime tone देखिएगा. Ostock. Those overtones whose frequency are integral multiple of the fundamental tones are called harmonics. The harmonic ear is normally sensitive to sound whose frequency are between 20 and 20,000 Hz. Below 16 Hz infrasonic and about 2000 Hz ultrasonic. Okay. Next, the intensity of a sound intensity of sound wave in air is proportional to the square of amplitude, square of frequency, the density of air. Okay. Next, loudness is proportional to the square of amplitude, density of the medium, surface area of the vibrating body, inversely proportional to the square of distance. देखिए, every points is very important for short question multiple choice के लिए. It is due to Doppler effect that the whistle or a train appears shriller when it's approaches a listener than when it moves away from him. Next, how the time period of a simple harmonic motion depends on mass. Does not depend on mass. In gaseous medium, how the velocity of sound depend on the pressure. Does not depend on the pressure. Okay. Next, some model question I discuss. Okay. Next, some model question. What is the approximate intensity level of sound in decibel which can cause damage to eardrum? 70 decibel, 70. What is a second pendulum? A pendulum which completes one vibration in 2 seconds. This is second pendulum. What is the term Mach number used to measure speed of aeroplanes?
Mach number, speed of aeroplanes. By which instrument earthquake is measured? Seismograph. On what principle does radar work? Radio wave are reflected by object. How the loudness of sound wave is determined by its amplitude. What is the use of radar? Detecting and fixed the position of object, that is aeroplanes. Why the walls and ceiling of an auditorium are covered with fibrous materials such as glass fibers, etc. They absorb sound and prevent echoes. What is the device used to measuring the depth of the sea is called fathometer. This is the fathometer. Okay. What is the audible range of for human ear? 20 Hz to 20,000 Hz. Okay. Next. How the velocity of wave is measured? The product of frequency and wavelength. Which of the following parameters determines the pitch of sound? Frequency. Why the echoes are produced? Due to reflection of the sound. Due to reflection of the sound. Why a woman's voice is shriller than a man's? It has higher frequency. In which medium no sound can be heard? In complete vacuum. Which instrument is used to detect sound underwater? Which instrument is used to detect sound underwater? हाइड्रोफोन. दिस इज द हाइड्रोफोन. देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साउंड एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस हुआ एंड जितना पॉइंट डिस्कस किया अभी ध्यान से देख लीजिए. एंड एवरी पॉइंट्स इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा जितना हो सकता है. सो आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ से उसी के लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है सिंपल हार्मोनिक एंड साउंड के बारे में. ओके एवरीबॉडी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपका ग्रुप में या फ्रेंड के साथ. ओके टुडे बाय बाय. अस्सलाम वालेकुम.